So Ananta, we'll start in some time. There is a storm coming here, so people might be late. So you can stay on mute. Just be patient.
will be better. So those of you guys who are joining us online, we'll be starting in another 10-15 minutes. We are giving people the benefit of being able to come. The weather suddenly turned bad. So please be patient. Thank you for joining on time. What it with me, but I'm so forgetful. I always forget it in my car, and then I have to use one of these, and I feel so guilty. So basically, the choices are both bad because if you get a cooler, then we'll have to give paper cups, then it becomes a problem. So we have a lot of back and forth of this. Like, what about people just having their own mug or bottle or something, and then being in charge of that? Like, nobody is going to be cleaning after you. That culture has not come there. Okay. Hey Rushabh, hi. Hello everybody, hey Titash. So we are waiting a little longer because what time is it for you right now? Is it very early? Or late? 5:30, but 5:30? it's good. It's Okay. okay. I'm good. I'm glad to be out there. Yeah, he's from so he's from the west coast. So we're waiting because the weather's turned bad a little bit. So we're just waiting for a while before we start. So Sure, sure. Uh-huh. But we'll start and then we can repeat again. 6-7. Okay, we'll start at 6:10. 6:10. Yeah, 3 minutes. So I guess man. So just in case the light goes, we will turn into for those of you guys who are online, a fair warning in advance. The electricity might go because the weather's turned bad. In which case, we will try our best to come back online as soon as possible. So please wait for a while, maybe 15 minutes, give it 20 minutes. For those of you who are here, the light goes, we turn into conversation mode. जितना भी अपन ने cover किया होगा उसके ऊपर. I'm also ये presentation I'm also keeping it a mix of Hindi and English. इसका reason ये है कि Bhaskar is a project where we are celebrating Indian culture. So I'm trying कि जितना ज़्यादा हो सके mix English and Hindi language. So कुछ slide हिंदी में कुछ इंग्लिश में और मैं बैक एंड फोर्थ मिक्स करूंगा. सो इफ यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड समथिंग तो मुझे पूछ लेना क्योंकि सम टर्म्स हिंदी में एक्चुअली ज्यादा कठिन हो जाती हैं समझना. which is a funny thing but that is how it is. And also the structure of this evening is कि हम पहले थोड़ा सा एयर फिल्म मेकिंग के बारे में बात करेंगे. The first thing we will do is we will talk about why we think air filmmaking is a big opportunity कि हम क्यों बात करें. और उसके बाद we will talk see a film
and we'll talk about it. See us and we'll talk about it. Okay. It's nice, we'll be learning some Hindi words, new Hindi words. It's old. Yeah. Yeah. Well, saying now we'll continue. I just start. Oh, we'll now start. The folks joining from Bangalore, they don't understand. Some folks, मतलब context they can understand. Can you visualize your equal speed? I have one question. Titash, are we doing interactive or this is more of a learning kind of thing? Like, We will keep it interactive, but the structure Mhm. is that I will show a slide, then we can have conversation around it. Completely feel free to ask. The second, and then there is a film after every slide. So basically, the slide is about the film. So the first slide is about why filmmaking is important. AI filmmaking is a big opportunity. Second wala hai about the process, largely at a high level. Third, उसके बाद से हर film के बाद एक slide है. So and there are 4 films, not very long. ठीक है. 3 of them are ours, जो हमने बनाई. और एक जो बहुत फेमस है हेलग्राइंड, which I don't know क्या अभी उसकी खास बात ये उस फिल्म की कि वो अभी कान में रिलीज हुई है, so it's come and come. So yeah. So but yeah, everybody is welcome to chime in. Yeah. Okay. How are you? Hi, I'm good. Thank you. How are you doing? Like the weather is actually I anticipated this. It's getting really, really hot out. Yeah. The visibility is so poor and it's So is it fixed then? Tell me that. Yeah. Okay. So one minute. Okay, so first of all, thanks for joining us. For those of you who don't know, actually I should go to the first slide first, give a formal introduction. Project Bhaskar, जो हमने अभी एक 6 महीने पहले स्टार्ट किया है, उसका मैंडेट है टू वर्क अक्रॉस कल्चर, हेरिटेज, लैंग्वेज, एआई एंड कम्युनिटी. उसमें से एआई में हम लोग एआई प्रोडक्ट्स और एआई फिल्म मेकिंग पे फोकस करते हैं. हर सैटरडे को हम कोई इवेंट करते हैं और वो इवेंट का मेन रिक्वायरमेंट मतलब मेन ऑब्जेक्टिव होता है जस्ट टू बिल्ड इन पब्लिक. तो हम जो बना रहे हैं यहाँ लैब में, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वी ब्रिंग इट आउट इन फ्रंट ऑफ द पीपल. The audience size doesn't matter to us क्योंकि हम we do it for ourselves and we keep it open. तो लोग आएंगे तो they will get to learn. So in that note, the first AI film night is today. तो सबसे पहले बात करते हैं कि एआई फिल्म जरूरी क्यों है इंडिया में, मतलब हमको क्यों अटेंशन देना चाहिए. इसके लिए मैंने ये स्लाइड स्पेसिफिकली इसलिए बनाई है कि why should we care about AI films, and so I will speak in Hindi, the content is in English so that both audiences can work. I'll mix my this thing. So personally also I believe कि 1760 में जब स्टीम इंजन बना था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो उस वक्त जो फिल्म the people who were farm workers, they became suddenly they had an opportunity to become mill owners. Similarly, AI is giving the first opportunity to storytellers to become studio owners. ठीक है. एंड इंडिया के लिए स्पेसिफिकली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेजर ट्रव है स्टोरीज का. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम इंडियन और मुझे बहुत ऐसे वो होता है. आई एम सेइंग दिस बिकॉज दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट, और मैं ये प्रूव भी करूंगा इस कॉन्वर्सेशन के एंड पे कि व्हाई वी थिंक दैट व्हाई आई थिंक दैट वी हैव अबाउट 1.4 मिलियन स्टोरीज जो अब हम एआई से प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज वन बिग अपॉर्चुनिटी जो हमारे लिए है. ठीक है. द सेकंड, Kunal, ask them to come in. Don't, the event has started. वो बात में कर लेना ना.
So guys, there are some people, so we'll wait for them. So for those of you who have joined me, I'll take a minute for others to come in and listen to this. There's an extra chair. So I think there's a large number of people who have come in, so we'll go. Okay, so hi everybody, I guess we have to restart. For those of you who don't know me, my name is Chitash Nogi. I am the co-founder at Project Bhaskar. और आप लोग जो अभी फर्स्ट टाइम आए, मैं उनके लिए बताता हूँ कि प्रोजेक्ट भास्कर हमारा एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जो इसमें हम बहुत सारी चीजों पे रिसर्च करते हैं, कल्चर, हेरिटेज, लैंग्वेज, एआई और कम्युनिटी बिल्डिंग पे। और हम जो भी लैब में रिसर्च करते हैं उसको हम हर वीक यहाँ पे इवेंट में लोगों के सामने लाते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू डू व्हाट इज नोन एज बिल्ड इन पब्लिक, विच मीन्स दैट आप जो भी काम करते हो वो सबको बताओ ताकि सब सीखें और कुछ नए आइडियाज आ सकें। तो उस स्पेक्ट्रम में दिस इवेंट ऑन दिस सैटरडे इज अबाउट एआई फिल्म मेकिंग। और ये पहला इवेंट है एआई फिल्म मेकिंग का। आने वाले टाइम में हम और एआई फिल्म्स बनाएंगे। आप में से जिन लोगों को इंटरेस्ट है, they can come and participate and join and learn from us. You are more than welcome. All the events are going to be free because our main our main sponsor is our company Adaptive.me. We'll talk about that later. So to repeat, this was a slide I was on last time, and also as a disclaimer कि मैं कुछ स्लाइड हिंदी में है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलूंगा। और उसका मेन रीजन ये है कि क्योंकि भास्कर भारतीय संस्कृति एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंडियन कल्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च करती है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करें जितना हो सके। सो एआई फिल्में भारत की एक अगली क्रांति है, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा बहुत लोग मानते हैं। और उसका रीजन ये है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा कहानियों का खजाना है और वो खजाने को अब हम स्टोरीज में ला सकते हैं। इंडियन माइथोलॉजिकल टेल्स, ट्रेडिशंस, फोकलोर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अगर जाने और समझे तो उससे हम $multi-million फिल्म्स एट लो बजट बना सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी अगर हमने लूज करी तो हॉलीवुड उसको ले जाएगा। बिकॉज टिपिकली वही होता है कि जो स्टोरी लिखता है वही इतिहासकार बनता है। तो हमारे पास अब पहली ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि टेक्नोलॉजी इस पॉइंट पे आ गई है कि आप लोग सब इस स्किल को सीख के स्टोरी टेलर्स, फिल्म मेकर्स बन सकते हैं। पर अगर हम नहीं बनेंगे तो हॉलीवुड which is already ahead of us, China which is already ahead of us, because they have the tools, they will take that opportunity. और तीसरा पिलर ये है, for those of you, you may or may not be planning to become a filmmaker, you may know some people who want to become a filmmaker. Filmmaking is changing as a tradition, as a profession. Okay, so ये पेशा हमेशा के लिए अब बदल रहा है, because अब ये आने वाले 5-10 साल में artists will be a part of it, but a lot of other people will join this profession जो पहले historically कभी फिल्म मेकर नहीं थे। और उसका रीजन ये है कि इस फिल्म मेकिंग के लिए अब बड़ा क्रू, बड़ा बजट, ये सब नहीं चाहिए। सो ये 3 बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको एआई फिल्म मेकिंग पे फोकस करना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई प्रोजेक्ट भास्कर के अंडर में हमारा एक पिलर एआई फिल्म मेकिंग पे डेडिकेटेड है। तो हम एआई पे वर्क करते हैं और एआई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट एआई फिल्म मेकिंग पे भी हम काफी टाइम लगाते हैं। सो व्हाट इज एआई फिल्म मेकिंग? ठीक है, इसको हटा देते हैं। हाँ, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एआई फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है ये एक पूरी पाइपलाइन है, फेयरली कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हमारा ये सोचना है कि एआई फिल्म मेकिंग आसान है, सस्ती है, जेमिनी या चैट जीपीटी पे जाके इमेज डालते वीडियो बना सकते हैं, तो दैट इज नॉट एआई फिल्म मेकिंग। एआई फिल्म मेकिंग में ऐसा नहीं है कि बजट कम लगेगा या लोग कम लगेंगे, स्किल सेट शिफ्ट हो गया है, अपॉर्चुनिटीज
चेंज हो गई है, नए लोग आ सकते हैं, पुराने लोगों के लिए अभी एक थ्रेड बन गया है। कोई भी पाइपलाइन में सबसे पहला काम है स्टोरी या रिसर्च। तो हमने जो भी अभी तक फिल्म बनाई है, जो हम अभी शो करेंगे आपको, उनमें हमने मोस्टली ये पाइपलाइन फॉलो करी है। बहुत लोग थोड़ी अलग अलग पाइपलाइन फॉलो करते हैं, बट मेनली आप स्टोरी से स्टार्ट करते हो, स्टोरी की रिसर्च करते हो। दिस इज ट्रेडिशनल, ये सब स्टोरी फिल्म मेकिंग में होता ही है। फिर आप एआई फिल्म मेकिंग का एक सबसे बड़ा पार्ट है इमेज जनरेशन। सो आप कोई भी जब आप स्टोरी बोर्डिंग करते हो किसी भी सिनेरियो की, तो उसके लिए आप इमेजेस बनाते हो, सो दैट एज अ फिल्म मेकर यू कैन से कि जो मैंने बनाया है, जो मैंने लिखा है, वो कैसा बन रहा है क्या। उसके बाद उन इमेजेस से आप सीन्स क्रिएट करते हो। वन थिंग दैट आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वीडियो क्रिएशन की जो एआई मॉडल्स हैं, उनका अभी लिमिटेशन है कि वो सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो एक टाइम पे बना सकती है। विच मीन्स कि अगर आपको 1 घंटे की पिक्चर बनानी है या 1 मिनट की पिक्चर बनानी है, वो 10-10 सेकंड के टुकड़ों में ही बनेगी। सो ये बहुत बड़ा स्किल है जो लोगों को सीखना पड़ रहा है, और लोग सीख भी रहे हैं एक्चुअली, एंड वी विल सी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। बट सीन क्रिएशन इन्वॉल्व दैट। उसके बाद एक बड़ा स्टेप आता है क्यूरेशन। तो अब होता क्या है कि आप प्रॉम्प्ट्स लिखते हो, आई एम श्योर कि इस रूम में सबने प्रॉम्प्ट्स लिख करके और चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड यूज करके कुछ किया है। जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हो तो आपको कुछ आउटपुट मिलता है। इसी तरह से आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, इमेज बनता है, प्रॉम्प्ट लिखते हो, वीडियो बनता है, राइट। अब आपको जो वीडियो बनता है, उस वीडियो में कभी कुछ ऑडिटी आएगी, कभी कुछ ठीक नहीं आएगा, तो आपको फिर से जनरेट करना पड़ेगा। इसको जेनरेशन बोलते हैं। तो ऐसे बार 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 जनरेशन कर करके हमको फाइनल आउटपुट मिलता है, जिसमें हम बोलते हैं हाँ अब ये ठीक है। सो ये जो पार्ट है सीन क्यूरेशन एंड सिलेक्शन का, ये वो पार्ट है जहां पे आपके पास एक ही पर्टिकुलर सीन के लिए 100 आउटपुट्स हैं, उसमें से आपको बेस्ट वाला पिक करना है, ठीक है। देन कम्स ऑडियो एंड वॉइस जनरेशन। उसके लिए हम 11 लैब्स और सुनो एआई यूज करते हैं। दे आर रियली गुड प्रोडक्ट्स, और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये काफी अच्छे हैं। मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग इनको सीखें। एंड देन फाइनली कम्स एडिटिंग एंड मिक्सिंग, जो मैं कैनवा में करता हूँ, हम लोग कैनवा में करते हैं, बट इसके लिए लोग बहुत सारे दूसरे टूल्स भी यूज करते हैं। सो दिस इज द फुल पाइपलाइन जो एआई फिल्म मेकिंग में यूज होती है। क्यों इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी, स्वाद, जिसको हम फॉर्मल लैंग्वेज में टेस्ट बोलते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करके इट बिकम्स लिटिल ऑड, और पेशेंस। सो देयर आर 3 गेम्स ऑफ एआई फिल्म मेकिंग। यू एंड एआई में ही ये 3 चीजें हैं। यू नीड टू हैव अ स्टोरी और अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू नीड टू हैव टेस्ट, एंड टेस्ट इज अ स्किल इन टुडेज वर्ल्ड। एंड टेस्ट का मतलब होता है कि 2 लोग हैं और एक एआई जनरेशन है, दोनों में से जिसने बेटर सिलेक्शन किया, वो एक ऐसी इंटेंजिबल चीज है जिसको आप सीख सकते हो, कोई आपको सिखा नहीं सकता। उसको हम कहते हैं टेस्ट, ठीक है। ये 3 स्किल्स अब इंपॉर्टेंट हो गई है, विच मीन्स स्टोरी, टेस्ट एंड पेशेंस। So without taking too much time, I wanted to dwell on this process. I wanted to dwell on why AI filmmaking is important. But now let us move to the interesting part. Let's look at, the first of our AI films. तो पहली एआई फिल्म हमने जब 4-5 महीने पहले ये लैब स्टार्ट करी थी, तो हमने सबसे पहली फिल्म बनाई थी रेंडरिंग होम, बिकॉज हम अजमेर में चालू कर रहे थे। तो हमारा पहला काम ये था कि हम अजमेर पे एक एआई फिल्म बनाएंगे। इस फिल्म के लिए कुछ मैं स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। जैसे जैसे मैं ये फिल्म प्ले करूंगा, इन स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको सच में इस डोमेन में इंटरेस्ट है या नहीं भी है, ये नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। इस फिल्म को बनाने में, ये टोटल फिल्म 10 मिनट की है। इसको बनाने में हमको 3 महीने लगे, बिकॉज हमने बहुत सारा बैकग्राउंड रिसर्च किया, बहुत सारा डेटा उसको स्टोरी बोर्ड किया। इसका टोटल टोकन कॉस्ट, एआई प्लेटफॉर्म कॉस्ट $100 आया। इसको एक इंसान ने बनाया और ये सारे टूल्स यूज हुए, ठीक है। नाउ दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट। एक एक सीन जो आप देखेंगे 10-10 सेकंड की, वो 30 बार बनी है। 30 जनरेशन के बाद एक सीन बनी है। तो ये नंबर बार बार चेंज होगा, इस नंबर पे ध्यान दीजिएगा। एआई फिल्म मेकिंग का सीक्रेट सॉस यही है, ठीक है। So, yeah. I just want to use what processor or any compute power you use. This is all on the cloud. There is no compute power needed because ये सारी वेब टूल्स हैं जो भी मैंने लिस्ट करी है, ये सारे they are all वेब। Okay, any other questions? Am I going too fast? कोई questions है? ठीक है, अपन रेंडरिंग होम देखते हैं, ठीक है।
Across the vast sweep of continents and centuries, civilizations have risen and fallen. On the Indian subcontinent, in the shadow of ancient hills, a city would stand witness to them all. Ajmer, before kings and conquests, there was fire. From molten earth and shifting stone, the land itself was born. The ancient Arabling, rising from flame and fury in deep geological time. Through ancient tectonic forces, the Aravalli Range took shape among the oldest mountain systems on Earth. Within these weathered hills, long before empire and faith, the land of the Ajmer gradually formed. What tectonic forces began, erosion refined. Through shifting climates and flowing waters, the hills were carved into basins and valleys. A landscape shaped not in a moment, but across ages. After ages of erosion and climatic shifts, the land formed plains and seasonal basins. In the heart of Rajasthan, monsoon waters gathered, sustaining grasslands and scrub forests within a semi-arid landscape. Ajmer's story does not begin with kings. It begins with water. Grasses spread. Acacia took root. The first herds arrived, answering the life it quietly called for. At amber dusk, striped scavengers crossed the dunes. The leopard ruled Ajmer's ridges, patient, silent, powerful. Monsoon came. Peacocks happily bloomed in rain. Early hands shaped microliths, life etched beneath Aravalli hills. Violet rock shelters, families resting above roaming herds. By still waters at dawn, stone met bone. Humans had arrived. It's easy because of Zoom. Go directly to Because of the transfer. so I'll pause it because it's. So guys, we just take a little pause. So we'll, No, we'll play it from within. from YouTube, Uh, then yes, you have the channel link. I do. No, I have. Hmm? So that is- हाँ, you can find it. हाँ, cookie भी कर सकता है. So इसमें rendering home भी है ना? हाँ, rendering है. We'll have to go to all the or it will come here. ठीक है. Across the vast sweep of continents and centuries, civilizations have risen and fallen. No, it's because of Zoom that it is. We'll have to. What films? Seasonal words crossed Ajmer, the first rhythms of pastoral life. Early Brahmin inscriptions in the Aravalli Hills, evidence of written culture in ancient Ajmer. Wilderness did not retreat, it watched, it waited, and Ajmer learned to belong. What was once shelter became settlement. Valleys filled with barley and wheat. Ajmer
turning toward cultivation. From Shah Company rose the Chahmani, warrior rulers who would shape the destiny of Ajmer. In the shelter of Aravalli Hills, the Chahman chose strength, a fortress commanding trade and frontier. King Ajay Dev shaped Taragarh Hill, stone and strategy rising, a fortress against time and threat. From these hills rose Ajmeru, forged by King Ajay Dev, a name history would later whisper as Ajmer. At first light, Chauhan leaders marked the earth, alliances sealed, roots secured, power ascending. In the reign of Vigraharaj Chaturthi, Hindu Mandap emerged, a Sanskrit college temple complex of learning and power. Before teaching, there was practice. Young Prithviraj Chauhan, refining skill under watchful guidance. In 1191 at Rhine, Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Ghori, halting his northern advance. After defeat in 1191, Muhammad Ghori regrouped, not broken, but determined to return. Victorious after, Chauhan forces rode up, unaware the conflict was not yet over. But in 1192, at the Second Battle of Trine, Muhammad Ghori returned. And this time, Prithviraj Chauhan suffered defeat. With great victory, Ajmer entered a new chapter. Under Qutbuddin Aibak, Ajmer entered Ghurib rule. Garrisons posted, authority restructured. From Visal Dev Mandap to Adhai Din Ka Chhopda, stone remembered, purpose changed. Empires claimed Ajmer, but devotion defined it. From Khwaja Moinuddin Chishti, it became a sanctuary for centuries. Page by page, Delhi's dynasty unfolded. Mamluk, Khilji, Tughlaq, Sayyid, and Lodi shaping empire and history. Ajmer rises as a Sultanate stronghold, walls fortified, garrison stationed, frontier secured. Until Sultan quarrel, councils fracture, and the Sultanate's power falters. Mughal hold tightens, poised to leave an indelible mark on Ajmer's story. Ajmer's Dargah, already revered, gained divine renown and Mughal favor, with Akbar among its devoted pilgrims. From Humayun to Akbar, Rajasthan greets the young emperor in Ajmer. Akbar regularly sought blessings at Khwaja Moinuddin Chishti's shrine. In 1570, Akbar built a fort in Ajmer, both the pilgrimage residence and the Mughal military outpost. This is also where Emperor Jahangir, son of Akbar, received Sir Thomas, permitting the East India Company to trade in India. In the early 17th century, Jahangir developed Daulat Bagh in Ajmer, the garden now called Subhash Udyan. From the Deccan rose the Maratha, disciplined, ambitious, relentless. Under the city of Gwalior, their influence stretched into Rajasthan, and Ajmer became part of a new political order. At Meghdha in 1790, the Maratha prevailed, and Ajmer's fate was sealed under Sindhya rule. The Maratha imposed order, replacing uncertainty with administration, revenue systems, and disciplined rule.
Under Scindia administration, Ajmer grew orderly, its markets thriving in renewed stability. Following Anglo-Maratha defeat, Ajmer passed into British control in 1880. Ajmer's fort now bore the British flag, signaling colonial rule. Maps unfolded and echoes multiplied as British governance reshaped Ajmer. Stone by stone, colonial institutions anchored British power in the city. Founded in 1875 by Lord Mayo, Mayo College trained India's princely elite. In 1892, engineer Mr. Foy constructed Foy Saga to combat famine. In 1875, the railway arrived, connecting Ajmer to imperial trade routes. In 1887, the Jubilee Clock Tower rose. After independence, Ajmer existed as Ajmer Mewara state before merging into Rajasthan in 1956 under the States Reorganization Act. After the partition, thousands of Sindhi Hindus fled the new Pakistan, traveling to refugee camps and settlements in cities like Ajmer. The Sindhi Hindu community found new roots, rebuilding homes, preserving traditions, keeping their identity alive. Yet uncertainty remained for some communities, including the Anglo-Indians. Independence brought change, but not everyone chose to leave. Many Anglo-Indian families stayed. Their presence remained an important part of the city's railways, schools, and administrative life. Though small in number, the Anglo-Indian community remained deeply connected to India's railways and public institutions. 1956, readers examined a newspaper announcing Ajmer's merger into Rajasthan, quietly discussing the historic change. As Ajmer integrated into Rajasthan, government offices became the spaces where the systems of a modern city slowly took shape. In the early 1960s, the Board of Secondary Education Rajasthan was established in Ajmer, transforming the city into the academic nerve center of the state. Institutions like Government College Ajmer, established in 1836, St. Anselm's School, founded in 1904, laid the foundation for the city's growing education network. From Sophia's legacy of learning to JLN's pursuit of healing, Ajmer stands today as a thriving hub of education. Through missionary institutions and English medium schools, Ajmer developed a strong culture of modern education and communication. From the sacred shrine of Khwaja Moinuddin Chishti to the heights of Taragarh, Ajmer blends heritage with progress. As the city expanded, its streets grew busier, blending historic neighborhoods with a rapidly changing urban life. Beyond its streets and markets, the city's identity also lives in its food, simple traditions shared across generations. In Ajmer, a new generation of thinkers is exploring how artificial intelligence can connect with India's cultural heritage, the beginning of Project Bhaskar, a city of history and culture, now connected by ideas and intelligence. Ajmer, stepping into the future. That's the first film. So any questions, anybody has any points, you can, before we move to the next. So ये जो हमने फिल्म पहली बनाई थी, हमने इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स लिए थे because फर्स्ट फिल्म की कंस्ट्रेंट भी था, टाइम भी बहुत लग रहा था. So we ended up having to reduce the number of durations. तो आपने देखा होगा इस फिल्म में, क्योंकि ये थोड़ी स्लो चल रही है because of the streaming, तो इसलिए ज्यादा देख के आता है.
कि कहीं कहीं पे जैसे लास्ट सीन था, इफ यू ऑब्जर्व कि क्लास वगैरह चल रही है, बच्चा ऐसे बैठा हुआ है, तो दोज आर थिंग्स दैट एआई जनरेशन में दोज आर द चैलेंजेस। तो और उसी को क्यूरेशन बोलते हैं। सो बेसिकली जब वो एक 10 सेकंड की सीन बनती है, तो इफ यू आर एआई फिल्म क्रिएटर, आपको ये देखना है कि अच्छा इसको मैं दोबारा बनाऊं, तीसरी बार, चौथी बार। कई बार होता है कि एक ही सीन को 25-30 बार भी बनाना पड़ जाता है, तब जाके वो फाइनली बनती है। अब आपका अगर बजट या टाइम कंस्ट्रेंट है, तो आपको फिर कहीं पे कट लेना पड़ता है कि ओके वी विल शिफ्ट विद दिस, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत वो करना पड़ता है। बट बिकॉज ये हमारी पहली फिल्म थी एंड वी वांटेड टू जस्ट फिनिश इट, बिकॉज टाइम बहुत लग रहा था रिसर्च में भी। फिर हमको ये भी चूज करना था कि बिकॉज एआई फिल्म आर अ वेरी पेंसटेकिंग प्रोसेस राइट नाउ, 10-10 सेकंड की फिल्म बनती है, तो हमको बहुत सारे वो लेने थे। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि नेक्स्ट फिल्म में होपफुली यू विल सी दैट वी हैव डन अ स्लाइटली बेटर जॉब। The next film is सैरंध्री। सैरंध्री की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। महाभारत के विराट पर्व से इसको हमने पिक किया है। और विदाउट टू मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट इट, मैं इसको अभी जस्ट ये बताऊंगा कि इसमें हमने नंबर ऑफ क्यूरेशन जो जनरेशन थे वो ज्यादा किए थे। फिल्म छोटे ड्यूरेशन की है, प्रोडक्शन टाइम भी कम टाइम था, लोग भी दो थे। सो सो यू विल सी दैट इसमें हमने थोड़े इम्प्रूवमेंट किए हैं, क्योंकि अंडरलाइन टेक्नोलॉजी भी हर 3 महीने में इम्प्रूव हो रही है। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है एआई फिल्म मेकिंग का। सो आर दोज ऑन द दिस थिंग एबल टू I check, but they're all there. ओके। So guys, please chime in on those of you who are online, if you have questions or So the number of curations per scene and decreased in this one as it yeah. was after मत्स्य few. राज्य की सीमा पर हम शम वृक्ष के नीचे मौन खड़े हैं। 12 वर्षों से अस्त्र हमारे अस्तित्व का हिस्सा थे, आज उन्हें रहस्य की तरह छुपाना होगा। कल से अस्तित्व नहीं, केवल हमारा धैर्य बचेगा। गांडीव भी पत्तों में विलीन हो जाएगा। कल था अजनबी बनकर जिएंगे, मगर मैं द्रौपदी स्वयं को कहाँ छुपाऊं? वन की निस्तब्धता में मैं अकेली खड़ी हूँ, एक एक पर अपनी पहचान उतारती हुई। स्वर्ण रहस्य की तरह हाथों से फिसलता है। ये केश अब दासी की चोटी में बंधते हैं। वे वस्त्र दिखेंगे, झुकी हुई आंखें दिखेंगे, पर नहीं देखेंगे भीतर की अग्नि। आज एक रानी अपना मुकुट उतारती है और बन जाती है सैरंध्री। यह मेरी कहानी है, एक रानी से दासी बनने का मेरा सफर, अपने राज्य की रक्षा के लिए एकाकी संघर्ष। वन के उस पार विराट का नगर खड़ा है, वचन भी चेतावनी भी। कभी मैं ऐसे ही द्वारों से गुजरी थी, नाम और वैभव के साथ। आज केवल सादा वस्त्र है और एक रहस्य। हर कदम के साथ द्रौपदी पीछे छूटती है। इन द्वारों के पार केवल सैरंध्री शेष रहेगी। कभी इस प्रकार के महलों की मैं महारानी थी, लेकिन कल सुबह मुझे सुदेशना इस महल में मुझे दासी बना ले। यह राज्य जो मत्स्य देश के नाम से भी जाना जाता है, अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मैं अपनी असली पहचान को छुपाकर एक साधारण दासी की तरह 1 वर्ष का यह समय बिताऊंगी। अरे, तुम कहाँ चली आ रही हो? विराट राजा के महल में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकती। कौन हो तुम? राजमहल में क्या चाहती हो? देवी, मैं एक दासी हूँ, शिल्प और सेवा में निपुण हूँ। देवी सैतंत्री, तेरे हस्तों में सत्य ही दैवीय कला है। ऐसा लगता है विधाता ने यह कौशल स्वयं तुझे वरदान में दिया है। महारानी, आप अति कृपालु हैं। यह कौशल तो विधाता की देन है।
देवी, आपके चरणों में प्रणाम। देवी की जय हो। महाराज को आपकी आवश्यकता है। कल्याण हो तेरा अनुज की चरण। दासी, दाने अनेक दासी देखी है, परंतु तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तुझे अपनी पट्टमहिषी के पद पर आसीन कर सकता हूँ। देव, मैं गंधर्व पत्नी हूँ। पति के जीवित रहते किसी अन्य का वरण करना मेरे लिए मृत्यु से भी बड़ा पाप है। सेनापति कीचक की जय हो। सेनापति जी, दासी सैरंद्री महारानी के कक्ष से अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रही है। सैरंद्री, मुझे कुछ प्रयोजन है, मेरे संग चलो। मैं सेनापति, यह अधर्म है। मैं गंधर्व पत्नी हूँ। कब तक कब तक अस्वीकार करती रहेगी मुझे, कीचक को? भगिनी, उस दासी ने कीचक का अपमान किया है, उसे आदेश दो मेरे कक्ष में आए और क्षमा याचना करे। दासी, सैरंद्री को अभी यहाँ उपस्थित कर। हे विधाता, जो अधर्म आज इस राजमहल में होने को है, उसकी भागिनी मैं भी हूँ। सैरंद्री, तूने अनुज कीचक का अपमान किया है। मदिरा लेकर उनके कक्ष में क्षमा याचना कर। सेनापति कीचक, यदि मेरे किसी आचरण से आपका अपमान हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। मुझे लगता है भाई लिखने के भाई भी एक सौंदर्य होता है। सैरंद्री, बहुत प्रतीक्षा कर चुका है कीचक, अब और नहीं। भाग जा, परंतु कब तक बचेगी कीचक से? मैं एक महारानी थी। 5 महारथी मेरे स्वामी हैं, और फिर भी आज मैं यहाँ एकाकी बैठी हूँ। कपट और मौत, यह मुख, यह नेत्र, क्या यही है वह पांचाली जो इंद्रप्रस्थ की महारानी थी, जिसके स्वयंवर में समस्त आर्यावर्त के राजा उपस्थित थे? मेरे स्वामी यहाँ हैं, अज्ञातवास में, परंतु है तो यही। युधिष्ठिर धर्म के रक्षक हैं, परंतु धर्म की सीमा में बंधे हैं। अर्जुन अजय धनुर्धर है, परंतु अभी बृहन्नना के वेश में है। उनका प्रकट होना अज्ञातवास को भंग कर देगा। सहदेव ज्ञानी है, भविष्य जानते हैं, परंतु यह कार्य ज्ञान से नहीं, भुजबल से होगा। नकुल कुशल है, चतुर है, परंतु इस अग्नि को बुझाने के लिए उनका दर्द पर्याप्त नहीं। और भी वल्लभ के वेश में छिपा वह प्रलय, जिसके भुजदंड के आगे कीचक का अहंकार धूल हो जाएगा। हाँ भीम, जब तक यह भुजदंड जीवित है, कीचक का अंत निश्चित है। पांचाली, आज रात्रि नृत्यशाला में कीचक का रक्त धरती पर गिरेगा, यह भीम का वचन है। यदि तुम सत्य में मुझसे प्रेम करते हो तो आज रात्रि नृत्यशाला में आगमन करो, मैं प्रतीक्षा करूंगी। कीचक की इच्छा के आगे कोई टिक नहीं सकता, न तू न तेरे गंधर्व स्वामी।
आज यह नृत्यशाला साक्षी है। सैरंद्री ने स्वयं कीचक को आमंत्रित किया। यह तू कौन है? सैरंद्री। सैरंद्री कहाँ है? छल है, छल है। छल नहीं कीचक, नीति, पांचाली की नीति। तूने मर्यादा का उल्लंघन किया, एक स्त्री पर दृष्टि डाली, उसका अपमान किया, उसे भयभीत किया। यह पाप क्षमा के योग्य नहीं। So in this film, in this film we tried to do a different thing. We tried. Hi, Nisha. Thank you so much for agreeing to do this. Thank you for inviting me for this. That is not AI generated. Yeah, so in this film we tried to sort of do lip sync. So you might have noticed that uh, we had the some of the characters in some time were talking, and so lip sync is a little difficult because you have to generate the scenes. You have to make sure that the camera focus is always on the faces, and you don't have control on who's speaking. Sometimes in lip sync, what happens is if a dialogue with two characters, you want this character to speak, but the AI generation comes with this character speak. So you have to regenerate. So in this one, we tried that. We kind of ran out of budget and time, so we had to take some shortcuts and some creative this thing. But one thing that I want you guys to understand is that AI filmmaking is also a very good tool for prototype filmmaking, which is called scratch film. So suppose you have an idea that you want to present to people and say that let's put some budget into it. You can make an AI film like this, which shows the concept and then present it to people and get a lot of buy-in. So that is also another very strong use case of AI films. The next one is this is an explanation of that. So basically we are working on a film called Warriors of Light. This is a concept that we are sort of evolving on. So this one is a trailer, and AI film generation is very useful for trailers. तो इस वाले में ये बहुत छोटी सी एक वो है, ट्रेलर है। और इस ट्रेलर में ये 1 मिनट का ट्रेलर है, एक ही दिन में बनाया, $5 लगे। और इसमें ये इट वॉज बेसिकली, मुझे सुबह आइडिया आया कि ऐसा फिल्म बना सकते हैं, इसमें ऐसे कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि इसका हम एक ट्रेलर बनाते हैं ताकि देखें कि लोगों को मजा आएगा कि नहीं इस कॉन्सेप्ट पे। तो ये एक एग्जाम्पल है उसका, तो मैं उसको प्ले करता हूँ। ये ग्लोबस फिल्म्स के हैंडल पे है ना, तो You want me to copy it from the नहीं, यहाँ से चल जाएगी। ठीक है, ये छोटी सी फिल्म है। हाँ, सबसे short. This film also has a soundtrack generated by AI. So there is a platform called Suno AI, which some of you might have heard.
which generates original soundtrack from prompt. तो ये जो पूरा साउंड ट्रैक था ये भी मैंने ट्राई किया कि एआई से जनरेट करें। इस तरह की फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूज केस है फॉर दोज ऑफ यू हु आर इनटू द क्रिएटिव फिल्म मेकिंग या कोई भी क्रिएटिव उसमें, एंड इट डजंट हैव टू बी ओनली इन दिस। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके लिए आपको फंड रेज करना है तो आप एआई फिल्म मेकिंग से एक पिच बना सकते हैं जो ज्यादा पावरफुल होगी, ज्यादा वो होगी। सो ये उस यूज केस को एग्जिबिट करता है कि जस्ट मेक अ ट्रेलर of 1 minute and present it to people, and people will connect better to the idea than other things. So that is an example of this. Any questions before Rushabh, you were asking something about generations in the past. This thing, if you're still around, I can answer. Huh? You might have dropped. Yeah, I guess Yeah. I saw that the second one was done in less generations, 25:1. Yeah, I mean, that is because we had a budget constraint. So every generations are all about budget. Okay, so whenever we have a budget constraint, the only thing we can hit is let's do less generations. That's all. And actually, two things. Generations come tab hoti hai when the technology improves. So models are becoming better. So हमने जो पहली फिल्म बनाई थी उसके अंदर हमने क्लीन एआई यूज किया था। अभी जो नया मॉडल आ गया है कुछ लोगों ने आपने सुना होगा सीक डांस करके। तो सीक डांस का एक लास्ट जो हमारा फिल्म है दैट यू शुड सी, that is not our film, Hellgrind. That is really mind blowing. So, but Seed Dance, जो अब नया मॉडल है, so Rushabh, the model that has come, Seed Dance, I mean, you know this, that's really very powerful, and that's really changing the game. In fact, वो बीच में बैन भी हो गया था यूएस में because Hollywood was really threatened by it. ये फिल्म मैंने 2 दिन में बनाई है अभी recently, specifically for this event, अटल निष्पक्षता। ये मेरी पर्सनल फेवरेट स्टोरी है और ये भगवत पुराण से ली गई स्टोरी है। एंड व्हेन आई रेड दिस स्टोरी इट रियली ब्लू माय माइंड। दिस हैज नथिंग टू डू विद एआई फिल्म मेकिंग। प्रोजेक्ट भास्कर में हमारा हेरिटेज और कल्चर का भी एक एंगल है, तो दिस इज फ्रॉम दैट एंगल कि अगर आप भगवत पुराण को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यू नो इफ सम ऑफ यू आर फैंस ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और एनी ऑफ द वेस्टर्न साइ-फाई, they are really nowhere. Like the level of imagination, storytelling, complexity of characters, and the nuanced plot and multiple plot lines in the Bhagavad Puran and in the entire Puranic treatise of 18 Purans is amazing. Like अगर हम इंडियन उस तरह से सोचेंगे तो हम $multi-billion फ्रेंचाइजी बना सकते हैं just by taking stories from Bhagavad Puran or from any of the other things. So इसलिए मैंने ये बनाया to show that we can now for the first time start making these stories without budget, because typically इंडिया में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास स्टोरीज होती है, बजट नहीं होता है, हॉलीवुड की तरह बजट नहीं होता है। पर अब हमारे पास वो बजट है because you don't need an expensive crew and an expensive this thing. So without taking too much time, let me show this last of our series of films, and then we will go to the last one. So, yeah. Yeah. वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय खड़े थे, भक्ति के गर्व से भरे। यह मानते हो जो प्रभु के सबसे परम भक्त हो वही इस दिव्य लोक के द्वारपाल होने के योग्य है। एक दिन 4 बालक साधु परम तेजस्वी कुमार भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा लेकर उस द्वार पर आए, पर अहंकार ने जय और विजय की आंखें अंधी कर दी थी। जय और विजय ने उनका मार्ग रोक दिया। तब कुमारों ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और उस शांत क्रोध में बोले, जय विजय, भक्ति में अहंकार कहां से आया? यह अहंकार वैकुंठ के योग्य नहीं। जाओ मृत्यु लोक में जन्म लो, जहां यह घमंड अपना फल भोगे। भगवान विष्णु स्वयं आए और उस करुणा भरे स्वर में बोले, यदि मेरे भक्तों में अहंकार आया तो कहीं ना कहीं यह मेरी भी चूक है। अब चुनो, 7 जन्म मेरे भक्त बनकर जियो या 3 जन्म मुझसे घृणा करो। मुझे मारने चलो और हर बार मैं स्वयं आऊंगा और तुम्हें अपने हाथों से मुक्ति दूंगा। और उन्होंने वह राह चुनी जो कठिन थी पर छोटी थी। कृत युग में
जय ने हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। पृथ्वी कराह उठी उसके अत्याचार के बोझ तले, और तब प्रभु विष्णु स्वयं वराह रूप में प्रकट हुए। दिव्य वराह ने अपने दांतों पर धरती को थाम लिया। जय को उनके हाथों मोक्ष मिला। दूसरा जन्म हिरण्यकशिपु, वही अहंकार, वही घमंड, पर इस बार एक बालक की भक्ति ने प्रभु को जगाया। नरसिंह प्रकट हुए और अपना वचन निभाया। त्रेता युग में महत्वाकांक्षा ने विजय का मुखौटा पहन लिया। 10 मस्तकों वाले रावण ने वह हर लिया जो सबसे पवित्र था। एक युद्ध छिड़ा, राज्यों का नहीं, धर्म का। राम के बाणों में सत्य था। कुंभकर्ण की गर्जना से स्वर्ग कांपा, पर भाग्य ने विजेता पहले ही चुन लिया था। द्वापर युग, जय और विजय का तीसरा और अंतिम जन्म। इस बार शिशुपाल और दंतवक्र बनकर आए। शिशुपाल को कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से और दंतवक्र को अपने हाथों से दोनों को मुक्ति दी, वैसे जैसा वचन दिया था। और इस प्रकार 3 जन्मों का दंड पूर्ण हुआ। असुर के रूप में जिए, पर विष्णु ने हर बार अपना वचन निभाया। जय और विजय एक बार वैकुंठ के द्वार पर खड़े हैं, अपने स्थान पर, अपने प्रभु के साथ। So ये story, this is a clip story. The interesting thing about this story is 1977 जॉर्ज लूकस स्टार वॉर्स, अगर आपको किसी ने भी स्टार वॉर्स फॉलो करा है, स्टार वॉर्स देखा है, इज अ स्ट्रॉन्ग लिस्ट फ्रॉम द भगवत पुराण। ओके, सो हम लोग रियलाइज भी करते हैं कि द वेस्टर्न media and Hollywood especially has borrowed heavily from our mythological corpus। और ये वाली स्टोरीज और भी बहुत स्टोरीज है भगवत पुराण में, तो इसको बनाने के पीछे, और इनफैक्ट हमारा एक बहुत बड़ा पिलर ऑफ वर्क भास्कर में यही है कि हम इस तरह की स्टोरीज को प्रोफेशनली बनाएंगे। ये तो अभी बहुत क्विक टाइम में एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए मैंने 2 दिन में बनाया था, जस्ट टू प्रेजेंट यू गाइस फॉर दिस इवेंट, की ऐसी स्टोरीज अब पॉसिबल है बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से। अब जो लास्ट वाला हम प्ले करेंगे सर, वो उसके बारे में मैं एक बार पहले बता देता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उससे आप लोगों को पता चलेगा कि इंडस्ट्री कहाँ पहुंच चुकी है ऑलरेडी, बिकॉज ये तो सारी हमारी होम ग्रोन स्टोरीज हैं। सो दिस वाज रिलीज्ड इन कान जो फ्रांस में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है। ये इस फिल्म की खासियत ये है कि ये पूरी एआई जनरेटेड है, 95 मिनट्स लॉन्ग। दिस इज द लॉन्गेस्ट एआई जनरेटेड फिल्म created till date and was allowed to be screened on in Cannes. So it's a big milestone for the industry also. इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हर शॉट जो आप देखेंगे वो 16,000 बार बनाई गई। So that is the level at which the industry is. What I want to show to you guys is कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा करियर और एक इंडस्ट्री वर्टिकल है। लाइक अगर आप लोग most of the students right now, so you should seriously consider this कि आने वाले टाइम में ये वाले स्किल सेट्स के लोगों को बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है। Why? Because you will need people, 15% team, and this 15% team is not people with like cameraman, crew, anything. These are all prompt engineering and visual artists. So with that in mind, let us take a look at Hellgrind. मैंने यहाँ पे लिंक है, बट वो बहुत ज्यादा पेज कर हाँ, वो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट, नहीं वो बहुत प्रॉब्लम करेगा, यहीं से चला देते हैं। हाँ so let us do the slideshow. So this is a trailer of the 95-minute film. Let's play this. You will see the difference. You ever think about what happens after? After what? After we stop? What now?
Long before humans walked the earth, there was a war between angels and demons. There's some other world full of demons. And now they're hunting us? Are you kidding me? They say the gods forged 6 artifacts of unimaginable power. 3 were taken by demons. 3 were hidden on Earth. The monsters catch them first. Our world ends. And you don't get to save your friend. Shit about any of this. Just tell me how to save the room. Let's click more. Did it just eat my bomb? Sir, are you ready to fight? Yes. Young man, what kind of training is this bullshit? Okay, if you do this, there's no going back. I will always be here. I'm coming. You the leader, I'm the boom. She the technician in the room. We don't steal from honest, no cap. We hit the systems, jack them up in the orphanage. One roof above us. Now we under one same star. Don't know what's waiting in the dark, but I'm with you, bro. I'm with you. That was terrible. So ये फिल्म 5 अभी ये इसके ट्रेलर हैं जो 500 which is around that crore. That's the budget of this film. But इसके बारे में ये इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इसको रियल वर्ल्ड में शूट करते तो इसका $50 million का बजट होगा. So it's brought down the budget a lot. And इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो अब मैं एक लास्ट मेरी कंक्लूडिंग स्लाइड है उसमें मैं I want to bring this up. कि the budget has not changed. ठीक है, बजट अभी भी है पर क्या चेंज हुआ है? This is really important to understand. पहले हम किस चीज पे खर्चा करते थे? We used to spend on crew, lights, location, devices, studio. Now that entire thing is shifting over to this, which is compute power. Somebody asked here. So you need compute power. You need taste, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हम स्वाद बोल सकते हैं. But ultimately it's knowing कि कौन सा duration, कौन सा generation अच्छा है. You need the direction. You need curation hours, which means आपके पास उतना वो टाइम होना चाहिए. And the story, of course. Story हमारे पास है. As Indian in India, we don't have any depth of stories. If we budget भी हमारे पास है. We just need talent. So if there is going to be a huge demand for people who are AI filmmakers because ये इंडिया में भी अब स्टूडियोज ने रियलाइज किया है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. So this shift is happening and a lot of people from here will move to here and there will be new opportunity that will open up here. In Bhaskar also हमारा ये objective है. We are building a platform called Globis.ai. That is a parallel platform जो हम बना रहे हैं. And Globis.ai is a film generation platform. Our objective within Bhaskar is to use all the tools and technologies and bring out stories from Indian culture. आपने देखा ऐसे सैरांध्री है, अजमेर की हिस्ट्री प्रोजेक्ट या जो भगवत पुराण का प्रोजेक्ट है वो भी. So with that, I'll open it up to questions for anybody online or offline. Any questions, any observations? कोई आपको points पता है? Happy to answer them or talk about them. Yeah, Steve.
Do you think people are open to this? They're going to like it because when the Ramayana trailer dropped, some people were speculating that AI had been used because of which it was receiving backlash, and the creators had to clarify that no, that this is because of some lightning change that you're feeling like this. So do you think people will accept this? Like, what is the acceptance like right now? Yeah, I think people are interested in stories. लोगों को story से मतलब है. Story कैसे? ये debate अभी क्यों हो रही है? Because AI is a new thing. So there is a debate going on. I understand कि there is a debate between artists and professionals versus new artists and professionals, because it's not like AI filmmaking is not art. It's a different kind of art. Okay, so old artists or existing artists are, and those kind of people are, and some people are debating, but ultimately the general public only wants stories. So agar, if the story is nice, if it is well produced, people will forget कि ये AI से, so होगा क्या, किसी भी technology में जैसे होता है, there's going to be a blend where you will not be able to tell whether this is an AI generated film or not. This is happening in writing anyways today, right? Like writing में तो already हो ही रहा है. Writing में ये last 2 साल पहले हुआ था. Film making में भी होने वाला है. So I understand your question. The answer to your question is that I think it's not like people will accept or not. I think people will stop caring because it will not be important for them. So because ultimately we all enjoy good stories, right? किसको नहीं पसंद है अच्छी कहानी जिससे हम relate कर सकें, अच्छी जो हमारे लिए जो हीरो और एंटी हीरो और क्लाइमैक्स को लेके आए, फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा कि वो AI से बनी है कि नहीं बनी है, बिकॉज अगर उस स्टोरी से आप लेते हो. यस But don't you think there's a human touch? While we watch movies, there's a story. Definitely agree. And this will also going to show the stories. Definitely agree. And you said people don't care about it's AI or not. Just they want to see the story. But what about the human touch? Don't you think this will disconnect them? No, but this is also human. So that is an interesting question, and that is what you have to all realize. Humans are not going away. The kind of humans are changing. So you had crew, this also will be operated by people. So the Hellgrind film was generated by 15 people. It was not generated by 500 people. You can say via 500, four different debate, but it will not be automated. The story is human. Humans will come together, 5 people, 7 people, 2 people. I think AI filmmaking is, you can look at it in a different way. It actually democratizes and gives the power of storytelling to everybody who can. पहले क्या था, अगर आपके पास एक अच्छी स्टोरी है, नो मैटर कितनी भी अच्छी स्टोरी है, अगर आपके पास बिग बजट हॉलीवुड या बॉलीवुड का एक्सेस नहीं है, तो आप उसको नहीं बना सकते. पर आज आप थोड़ा सा अगर ट्राई करोगे, थोड़ा सा आपके पास पैसा होगा, तो आप इससे बढ़िया 4 लोग मनी पूल करके भी उसको बना सकते हैं. तो आई थिंक it actually is a first time in our history that it is going to give us more stories if we look at it that way. Some people will get, और ये हर टेक्नोलॉजी शिफ्ट में होता ही है. जब हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस थे, फिर स्टीम इंजन आए, स्टीम इंजन के बाद इलेक्ट्रिक इंजन आए, टाइपराइटर्स थे, टाइपराइटर्स के बाद कंप्यूटर्स आए. तो हर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फेज पे ये शिफ्ट होता है, और हम भी अभी हम लोग सब एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में से जा रहे हैं. तो ये शिफ्ट तो होने वाला है. ह्यूमन टच तो नहीं जाएगा, ह्यूमन टच चेंज हो जाएगा. हु द ह्यूमन इज, हु इज कंसिडर्ड एन आर्टिस्ट विल चेंज. बिकॉज अभी कान में भी ये बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है. कान ने अभी रूल बनाया है कि आप ऐसी फिल्म को सबमिट नहीं कर सकते जो AI से जनरेटेड हैं. उन्होंने अभी, मुझे कैटेगरी ध्यान नहीं है. पॉइंट ये है कि वो ऐसा नहीं कह रहे कि आप AI फिल्म नहीं बना सकते. वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन कैटेगरी सबमिशन फिल्म में आप AI फिल्म्स को नहीं ला सकते. Which means क्या कि ये एक नया फॉर्म ऑफ आर्ट है. So that's what's gonna happen. Anybody online or? I have a question. So actually, if we talk about the market positioning of AI films, let's say if they are directly competing with Bollywood or Hollywood, how do you see the market growing over the years? Yeah, so I think the market will grow if more talent is available. India के साथ the challenge is that people are not aware of this opportunity.
So we are not getting enough people who can come in and start becoming AI filmmakers. The market is not so Indian film industry has a lot of money. Okay, and that money is kind of in a few pockets. But Bollywood has realized, and even Tollywood, actually down south तो ज़्यादा awareness है. Hyderabad film industry and the Chennai film industry is actually much more aware. In fact, I mean, I'm forgetting the name in Hyderabad, the Ramoji Film City. They have started making big investments in AI film. Challenge इंडिया के पास टैलेंट का आएगा, because it will be surprising, because historically हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं, but actually हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत नहीं है. We need people who are good in communication. We need people who are good in prompt writing, who are creative. And इंडिया के पास वो टैलेंट नहीं है, तो वो चैलेंज है. There's an incentive for that too as well. Like if there's a comparison being drawn between the talent of Indian skills, is there a I mean better compensation we can expect? Yeah. So the you're saying can we expect better compensation? Like my direct question to you would be software engineers directly competing with the creative engineers who are into the AI. Are they getting better compensation? No, I think it's not a question of compensation. It's a question of this is a different skill. A software engineer cannot necessarily become a AI creator because they creative को है. So the compensation question is different. यहाँ पे there is a different sort of this thing. Film industry, filmmaking is hugely compensating. There is a lot of money in this. If you're a good prompt engineer in an AI film industry, you will be superbly huge demand. Yeah, that's why I asked you, like, because it is generally based on prompt engineering, like how you would interact with the machine. Yeah. Initially, like, are you competing with the AI engineers or you have your own? No, you are not competing with AI engineers. You are competing with people who are creative. Yeah. There's a question on that. Yeah, go ahead. So, yeah. Do you think AI generated films will completely dominate the market in the future, replacing traditional filmmaking that relies on actors, crews, locations, and large production budgets? It's by Anush. Yeah, so I think the budget shift will be there. It won't completely take away this thing, but yeah, there is going to be a serious competition between AI. Most studios will, especially in early stages, will start considering making AI film. So there is going to be a lot of competition. Also because we live in a world जहाँ पे सब कुछ things are very difficult, in terms of commute and in terms of many other logistical challenges. So in that case, that will be the. Yeah, Vishti, you had a question. So just adding on to what you said what we have a lack of talent and awareness. So what I feel is talent follows opportunities and opportunities are created by investments. You see money flowing into this category, like are investors excited by this space? Money is already in this category. Investors are already excited. There is a lot of money waiting to be deployed in AI filmmaking, already getting deployed. So I don't think that is going anywhere. The issue is it's very early days, because this is a fast changing industry, but there are no formal courses right now. There is no formal training. So I think in the next 1 year, you will like one important signal for this. So most of you will know Shekhar Kapoor, a very famous filmmaker, right? So Shekhar Kapoor has recently become, this is the first example I know, has recently become in Dubai. There's a famous university, very well known institute, Mohammed bin Zayed University. He's become the first professor of AI filmmaking. So you will see this kind of formalization coming. पैसा तो ऑलरेडी है, पैसा बहुत है जो इंडिया में भी इन द एआई फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री मनी इज वेटिंग टू बी डिप्लॉयड, बट अभी क्या है कि लोग नहीं है. लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, लाइक हम भी फिल्म बनाना चाहते हैं, हमारे पास रॉ टैलेंट नहीं है कि हम उनको डिप्लॉय कर सके और बोले कि बिकॉज इसमें क्या है, यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट, यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट. सो एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, cool. Yeah, please. Right now, it's
industry. You can see a film, there's an actor. Okay. Then after the film is completed, even shut down from the theaters, we connect with the actor. So do you think in future we'll connect with the AI character, like connect with the person, the human? Or do you think the celebrities will make their AI versions themselves? So it will happen. Both will happen. Actually, this is a very good question. Yeah. Both will happen. We have examples of celebrities already licensing their AI. persona Huh. to make AI films. So that is already happening. Some celebrities have done that. New AI celebrities will come in. There will, I foresee, also be companies which are in the business of making AI film models and putting them out and making money out of them and this thing. So this is a big and new movement that will happen where you say that I will create an AI, like me as a organization, I will create 5 AI actors and I will put them out there and they will have fan following. ये होगा आगे. इसका, yeah, please go ahead. So the one point of this thing, like a person can put up an avatar or AI costume, can live a life of like a in a shadow without being pursued by a person. Yeah, it's not a con. It is, I don't know whether it's a con or not, but yeah, hoga. This will happen. Why? And I'll tell you why people will stop caring about it. Is because each successive generation cares less about certain aspects. Like if you look at our parents, they were much more focused on human connections, on doing things in a through paper or doing things in a certain way. Our generation was different. The generation that has come now is much more digital. They really don't care what wedding invites are WhatsApp invites. So you see that human behavior with each generation anyway stops caring about what. So we care a lot about human-to-human connection. Think 10 years from now, the generation that comes will not bother whether an avatar is AI or a human because they have not seen, उन्होंने वो दुनिया नहीं देखी है. तो जैसे जैसे बहुत सारे लोगों ने अभी वो दुनिया नहीं देखी जहाँ पे शादी होती थी तो सब लोग फूट पे जाके 100 लोगों को कार्ड बांटते थे. तो वही नॉर्मलाइजेशन बिहेवियर में आ जाएगा. या नो आई वाज जस्ट सेइंग कि मुझे बस ये नहीं पता कि ये कौन है कि प्रो है. ये है, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. आई डोंट हैव अ स्टैंड ऑन इट कि ये अच्छा है कि बुरा है. ये ऑब्जर्वेशन है मेरा कि ये सोशल चेंज आएगा. I saw a movie called Wall-E. It's about a robot. हाँ. तो उसमें जो दिखाते हैं कि सब बस चेयर पे बैठे हैं, everything serving. Yes. तो आपको लगता है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन लाइक 2-3 जनरेशन नेक्स्ट ये ऐसे ही कर रही होगी और is it good for our generation like social human being nature? हाँ, तो ये एक्चुअली दिस इज ये एक डिफरेंट डिबेट है और इसके पीछे बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं और AI filmmaking by itself will not aggravate or reduce it. I think ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन रिस्क है जो अभी हमको हमारे सबके ऊपर है और हम लोगों को पता नहीं है. हम लोग ऑलरेडी इस चीज को फीड कर रहे हैं. तो वी आर फीडिंग. आई मीन इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, थोड़ा अनपॉपुलर सा एग्जांपल होगा कि व्हेन वी हैव बिकम प्रोग्राम टू ऑर्डर फ्रॉम ब्लिंकिट एंड गेट थिंग्स एट होम. ये प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो चुकी है. तो अब इसके बाद वाला जनरेशन होगा उसका प्रोग्रामिंग ये होगा कि इफ आई जस्ट से इट शुड कम, द नेक्स्ट जनरेशन विल बी प्रोग्राम्ड इफ आई थिंक इट शुड कम. बिकॉज टेक्नोलॉजी powered by rich capitalists will keep pushing this because वो margin उनको like technologists जब technology बनाते तो वो ये नहीं सोचते कि इसका क्या impact होगा. Capitalists come along and say कि अरे इसको हम ऐसे use कर सकते हैं. तो वो risk तो है. It's more for capitalistic industries than for us. Yeah. Anybody else? Any other question? Yeah. So as per my perception, I believe that India is an emotional country in the field of filmmaking. Right. So can we say that after 10 years, Indian investors, foreign investors can invest money in filmmaking of AI generated films? Yeah, so your question is कि given that we are emotional and we connect emotionally to the actresses, तो क्या AI filmmaking में वो वाली बात आएगी? And यही question है, right? हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैं आंसर नहीं दे सकता बिकॉज आई एम नॉट रियली
expert at that level. मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ऐसे कोई भी चीज में ना, जैसे अभी बुक्स का भी एग्जांपल अच्छा है। जब पहली बार आई, आज से 10 साल या 15 साल पहले आईपैड लॉन्च हुए थे, तो सबने बोला था अरे किताबें छपना बंद हो जाएंगी, अब बुक्स ही आएंगी। बट बुक्स ने अपनी जगह रखी, किताब आईपैड ने अपनी जगह बनाई है। इट ऑल सेटल डाउन। जो लोग किंडल पढ़ते हैं वो किंडल ही पढ़ते हैं, जो लोग किंडल नहीं पढ़ते वो नहीं ही पढ़ते हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं। उन्होंने अपना पीस बना लिया। सो ये वैसे ही कुछ होगा। Things will settle down. Some people will say, I don't want AI film. Some people will say, I don't mind. मैं कुछ भी देख सकता हूँ as long as the story is good. And some people will say कि yeah, I only watch AI films. Now it is. I want to say this again. ये टेक्नोलॉजी के बारे में है ही नहीं, ये अपॉर्चुनिटी के बारे में है। अपॉर्चुनिटी दो तरीके से, एक ये कि हर इंडिविजुअल के पास अब एआई की वजह से ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी कहानी लोगों के सामने ला सकता है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो पहले पॉसिबल नहीं थी। आपको फिल्म मेकर, कैमरामैन, साउंड आर्टिस्ट सब कुछ लाना पड़ता, अब नहीं लाना पड़ेगा। दूसरा पार्ट है अपॉर्चुनिटी का, इट्स अ वेरी इंडियन थिंग। हमारी स्टोरीज एक्चुअली बाहर चोरी होकर के नरेट की जा रही हैं विद डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन, डिफरेंट ब्रांड, और हम उसको होने दे रहे हैं। और हम उसको अब रोक सकते हैं। इससे पहले बहाना था कि हमारे पास बजट्स नहीं है, बट अब वो बहाना नहीं। वी आर अल्टीमेटली स्मार्ट पीपल। ये स्टोरीज इनहेरेंटली इंडियन स्टोरीज हैं। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक दिस इज नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक्चुअली इज एन एनेबलर। तो वो है ये अपॉर्चुनिटी के बारे में। Any questions on that? No, that's. Okay. Yeah. Thank you, Rushabh and Anaita and others who have joined us. I think Ayushi, Anush. Anush, yeah. So Anush, Mahima, yeah. Jharna, thanks. Sakshi. Next time, hope to see you in person. Yeah. Okay, thanks a lot. Thank you, everybody. Thank in you. this Thank you so much. event. Thank you. This was very informative. Yep. I'll stop. I'll stop.